Welcome back. You're watching Headlines Now. President Pranab Mukherjee today directed officials to ensure special seating arrangements are made for leaders of opposition in Parliament during functions at Rashtrapati Bhavan. The direction from Mr. Mukherjee came after top BJP leaders who had attended an at-home function on August 15th were reportedly upset over the seating arrangements in the Rashtrapati Bhavan. Mukherjee has yesterday telephoned the BJP senior leaders L.K. Advani, Arun Jaitley and Sushma Swaraj after reports suggested that they were upset about the seating arrangements of the occasion of Independence Day. Senior BJP leader L.K. Advani today felicitated 6 medal winners and other participants of the 2012 London Olympics. Sports Minister Ajay Maken, along with a host of BJP leaders including Nitin Gadkari, attended the felicitation and congratulated the medal winners on their achievements. While applauding the performance of the athletes, Advani said the thought that India will become a super sports power in the near future was itself enthralling. Advani also said there are few countries which are ahead of India in the field of sports and Indian sportsmen should pledge to make India a super sports power. आज दुनिया सारी मानती है कि भारत न केवल एक सफल लोकतंत्रीय देश है जिसके बारे में आशंका थी जब 47 में हम आजाद हुए थे, लेकिन आज कोई हम सफल लोकतंत्रीय देश हैं इस पर आशंका नहीं करता, मानते हैं कि सफल है। कमियां जो होंगी उनको हम ठीक करते रहते हैं पूरी देर, उसके बारे में भी हम जागरूक हैं, लेकिन वैसे ही मानते हैं कि 21वीं शताब्दी में भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा, ऐसे लक्षण हैं, ऐसे आसार हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या कभी भारत एक सुपर स्पोर्ट्स पावर भी बनेगा? मैं कल्पना करता हूं कि एक दिन जरूर आएगा इसी शताब्दी में कि जब भारत एक सुपर स्पोर्ट्स पावर भी बनेगा। अभी तो पोटेंशियल बहुत है। पिछली बार पिछले ओलंपिक्स के अंदर हमारे मात्र 56 खिलाड़ी हमारे कंपीट कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। इस बार वो 56 से बढ़कर के संख्या 81 हो गई और यह अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार से खेलों के अंदर, नॉन क्रिकेट खेलों के अंदर भारत में रुचि बढ़ती जा रही है। And finally, Deepika Pallikal has made India proud once again. Deepika has become the first Indian to enter the semi-finals of a Golden Series event at the Australian Squash Open. Deepika recorded a convincing 11-5, 11-7, 12-10 win over her American rival. She will now meet world number 4 Laura Mazzaro from England. And that's the end of this bulletin. Stay tuned to NDTV Hindu for more news and updates.